Έπρεπε για κάποιο θεατρικό έργο να περιγράψω το χρηματιστήριο σιτηρών του Σικάγο. Νόμιζα πως γρήγορα θα μπορούσα να αποκτήσω τις απαραίτητες γνώσεις, ρωτώντας μερικούς ειδικούς χρηματιστές. Αλλιώς όμως ήρθαν τα πράγματα. Κανένας από όσους ρώτησα δεν μπόρεσε να μου εξηγήσει τους νόμους που κυβερνούν το χρηματιστήριο. Άρχισα να πιστεύω ότι το πράγμα ήταν ανεξήγητο, άπιαστο από το νου, άρα λοιπόν παράλογο. Ο τρόπος δηλαδή που διατηθόταν η παγκόσμια παραγωγή σιτηρών ήταν απλούστατα ακατανόητος. Κατάσταση ανυπόφορη για όλους, εκτός από μια χούφτα κερδοσκόπων. This is buying, your hands are this way. This is selling, your hands are this way. This is a quarter of a cent. That'd be you're bidding a quarter of a cent. This would be offering a half cent. Ο κύριος Βίκτορ Λεσπινάζ είναι παίχτης στο χρηματιστήριο σιτηρών του Σικάγο. Το χρηματιστήριο του Σικάγο διαφέρει από τα άλλα χρηματιστήρια έτσι όπως τα έχετε συνηθίσει. Εδώ αυτό που αγοράζετε και πωλείτε είναι φαγητό. Σιτάρι, καλαμπόκι, ρύζι και σόγια. Ελαιόλαδο, γάλα, εντόστια ζώων, ακόμα και κοιλιές γουρουνιών. You might be at the desk and you flash an order into the pip. You tell your broker, buy 200 at the market. And he'll buy the 200 and then he'll flash you back. You know, bought 200 at, say, 7.5. So, or you could tell them, cancel the order. Το χρηματιστήριο σιτηρών του Σικάγο είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο και οι συνεδριάσεις του καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις τιμές του φαγητού που βάζουμε στο τραπέζι μας καθημερινά. Ιδρύθηκε το 1848 ως μια ανοιχτή φασαριόζικη δημοπρασία, όπου οι αγρότες της περιοχής πουλούσαν τις οδιές τους στους εμπόρους. Από τότε η πρακτική μπορεί να μην άλλαξε, αλλά τα ήθη της οικονομίας έχουν σίγουρα αλλάξει. Everything has a sign. This is December. We risk again the specter of widespread hunger, malnutrition, and social unrest on an unprecedented scale. This is January. It's what I call a silent tsunami. It's not one storm hitting in one place. This is something that knows no borders. Like march down a road. The routine meeting of the heads of UN agencies turned into a crisis summit as the world counts the cost of not acting on earlier warnings. Many Haitians have come to rely on a traditional Haitian remedy for hunger pains,
Cookies made from the dried yellow dirt of the country's central plateau, salt and vegetable shortening have become a regular source of sustenance. July, things like that. A 15-year-old boy was killed, dozens others injured and arrested in riots sparked by rising food prices and falling wages. There was unrest, and they took my son and beat him severely, breaking both his legs. My son can't walk or speak now. My son is dying. Η κλιματική αλλαγή και τα βιοκαύσιμα έχουν κατηγορηθεί ότι προκάλεσαν ελλείψεις στα τρόφιμα που οδήγησαν τις τιμές τους στα ύψη. Πράγματι, και τα δύο αυτά στοιχεία έπαιξαν το ρόλο τους. Απροσδόκητες ξηρασίες κατέστρεψαν σοδιές ρυζιού και σιταριού, ενώ ένα μεγάλο μέρος της συγκομιδής καλαμποκιού στις Ηνωμένες Πολιτείες γίνεται καύσιμο για τα αυτοκίνητα και όχι τροφή για τους ανθρώπους. Ωστόσο, η κλασική θεωρία της προσφοράς και της ζήτησης δίνει μόνο μια μερική εξήγηση στο γιατί μέσα σε 2 χρόνια η τιμή του ρυζιού αυξήθηκε 217%, του σιταριού 136%, του καλαμποκιού 125% και της σόγιας 107%. There's sort of theoretical ways of describing it as saying it's greed, and there's practical ways of describing it to say that it's capitalism. It's certainly a food system which has always been somewhat corrupt, and is now at this point perhaps more in crisis and more corrupt than it has ever been before in human history. Η αύξηση της τιμής των τροφίμων στις πλούσιες χώρες σημαίνει ακριβότερα τρόφιμα στο σούπερ μάρκετ. Στις φτωχότερες όμως σημαίνει πείνα και θάνατο, καθώς οι περισσότεροι δεν έχουν τα χρήματα για να τα αγοράσουν. I don't know. That doesn't enter into my thinking. I don't know. I don't think about that. I'm trying to figure out what the market's going to do. Whether it was logical or not, to me, is beside the point. Because what counts to me is what is the market's reaction going to be? Because I'm a speculator. I'm trying to make money off the movement in the price of grain. Prices may have become a little too extended on the upside in March, April, and May of this year, but and for a couple of weeks it appeared that, my word, this will never stop, but it did. They prices do, so they have moderated rather dramatically since then. As we talk here in early November of 2008, I think prices are probably have gotten about as cheap as they're going to get and may well start moving higher once again. But the market acts really quite rationally. It just takes some time for that rationality to come to fruition and to correct. Μέχρι να διορθωθεί η αγορά, άλλοι 75 εκατομμύρια άνθρωποι προσθέθηκαν στις τάξεις των πεινασμένων του πλανήτη, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό τους στα 923 εκατομμύρια. Και αυτό τη στιγμή που ο πλούτος που παράγεται είναι ο μεγαλύτερος της τελευταίας δεκαετίας, ενώ υπάρχει ακόμα αρκετό φαγητό για να θρέψει επαρκώς όλους τους κατοίκους του πλανήτη. People have argued that it's because of increased demand for meat and dairy products in India and China, and that's simply not true. It's virtually a negligible consideration. It is because of speculation, because it's a commodity, that food is a commodity like silver or gold that can be negotiated and hoarded to some degree, and we're seeing that taking place. The high rise of food is because food has been put on the global casino, and this will lead to
massive starvation, massive famines. We have to bring food out of the international trading system. We have to bring food back into national and local food sovereignty. Η Ινδία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη παραγωγός χώρα ρυζιού στον κόσμο μετά την Κίνα. Είναι επίσης η τρίτη μεγαλύτερη στην παραγωγή σιταριού. Το 2008 μάλιστα η συνολική εισοδιά δημητριακών σημείωσε ρεκόρ, φτάνοντας τους 227 εκατομμύρια τόνους. Θα περίμενε λοιπόν κανείς ότι στην Ινδία το ποσοστό πείνας και υποσιτισμού θα ήταν μικρό. Και όμως, εδώ ζουν οι περισσότεροι πεινασμένοι άνθρωποι του πλανήτη. Πάνω από 200 εκατομμύρια. Και για να ολοκληρωθεί το παράδοξο, η συντριπτική πλειοψηφία είναι αγρότες. Farmers who are growing our food are going hungry because their grain is being sold to pay back the debts for chemicals and seeds. This negative agriculture, as I call it, is the reason for hunger in the world today. Η πολιτεία Μάντια Πράντες έχει το υψηλότερο ποσοστό παιδικού υποσιτισμού και ως εκ τούτου τον υψηλότερο δείκτη παιδικής θνησιμότητας στη χώρα. Η κατάσταση είναι τόσο σοβαρή όσο στην Αιθιοπία της Αφρικής. 46% of the children they are malnourished in India, and this is being reported by the National Family Health Survey. In Madhya Pradesh, 60% children, and if we'll convert them into number, about 6 million children, they are moderately malnourished. So these children have more probability of dying compared to normal children, and 50% of the under 5 mortality rate is due to malnutrition. So when the food prices has doubled, the quantity which they purchased earlier is also has reduced, and which has a direct impact on the intra-household food consumption by each family member. Η γιατρός Βαντάνα Γκαργουάλ δουλεύει για τη UNICEF. Η οργάνωση, σε συνεργασία με την κυβέρνηση, έχει στήσει σε πόλεις και χωριά κέντρα σύντησης. Εθελοντές παρακολουθούν το βάρος και την υγεία των παιδιών. Έχουν αναλάβει να τα ταΐζουν, αφού οι οικογένειές τους είναι τόσο φτωχές που αδυνατούν να το κάνουν. Now, this is a typical case of severe acute malnourished children. Her mother, Sunita, she works in field. Today morning, she left around 8 o'clock. Now she'll be back around 7 o'clock. Ravita, who needs a complete care, she just had half-inch chapati since morning, and which is the very inadequate quantity of food for 19 months old baby. If we see the quality of her hair, it's a very thin and sparse hair, and her respiration rate is also very high.
See, her mid-upper arm circumference is in red zone, that is 102. That indicates that this child is still severely acute malnourished child, and she needs special care like good therapeutic diet and medical treatment. रोटी चावल खाना अरे पहला तो 3-4 रुपये फंसे तो ना अब तो सर बेहू रहा 50-60 हाँ 50-60 हो रहा है जनता को कहाँ से अब भी 50-60 मिल रहे हैं तो एक कसेरी ना जाओ एक जने की मजदूरी है तो बामे से नॉन लेगो के मिर्च लेगो खा लेगो के सब्जी लेगो के इलाज कराओ के भाई में से अपन चक्की मक्की पे जाएंगे तो भी पैसा लेता अब एक पसेरी में से का करेंगे तुम दे चलो कुछ नहीं मिल रहा गरीब आदमी की तो सर बहुत परेशानी है अब देखो तुम गिरानी घर घर है एक दो बाल बच्चों तो उठ नहीं पा रहा और चलो डांग धरन का पेट में धरे के डांग धरन को दे बहुत खराब व्यवस्था चल रही है तो मैं गरीब आदमी अब कहाँ से पेट भरे के इलाज में लगा आज वर्तमान में अभी मान लो कि 50-60-70 रुपये मिल रहा है डेली का कुछ नहीं तो मतलब 40-45 रुपया का खर्चा तो जाएगा काएगी सामान की जे तो सर बहुत महंगा है मतलब बाजारों से हाँ ज़्यादा महंगा है मतलब बाजारों से तो अब मान लो वर्तमान में मतलब 80 रुपये किलो तो मतलब जिस सरसों का तेल दे रहे हैं मतलब बाजार से तो हम बड़ी मुश्किल से ले पाते हैं गेहूँ 60 रुपये पसेरी चल रहा है बहुत ज़्यादा बढ़ गई महंगाई पिछले साल से ही बहुत ऊपर है पल्ले ही मान लो जब 2 टाइम में मतलब संजय सवेरे की व्यवस्था में एक जगह की मतलब कच्चे माल से भाव में भी थोड़ी बहुत भाव में भी लग जाता है मतलब हम अपने कमी कर लेते पर बच्चों के लिए नहीं होनी चाहिए कमी Οι κάτοικοι εξαρτώνται από το συσίτιο του κράτους. Σε κάθε πόλη, σε κάθε χωριό έχουν ιδρυθεί μικρά κρατικά μαγαζιά που πουλάνε τρόφιμα σε πολύ χαμηλή τιμή. क्योंकि 90 रुपए में 35 किलो अनाज मिलता और 35 किलो में हमारा गुजारा चल जाता है। ये राशन कार्ड ले जाते हैं और वो गिन के देते हैं। Πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα παροχής επισιτιστικής βοήθειας παγκοσμίως. This year we have made record procurement, so we have already bought a total of 50 million tons of wheat and rice. Our annual turnover crosses 60 million tons of food grains, which makes the Food Corporation of India the biggest food grains trading company in the world. Ωστόσο το 1997 η Ινδία αναγκάστηκε να προσαρμόσει το δημόσιο σύστημα διανομής στις επιταγές της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Η παροχή φτηνής τροφής στον κόσμο ήταν ενάντια στον ανταγωνισμό και την ελεύθερη αγορά. Έτσι η βοήθεια περιορίστηκε σημαντικά. We had a universal food distribution system, the PDS. The World Bank forced us to dismantle it. As long as that system was in place, the farmers had a guaranteed market. Everyone had a guarantee to affordable food. You have a piece of paper, a ration card, which was India's identity card.
With that ration card, you could walk to your corner shop and get the 1 or 2 kilos of affordable food. The World Bank dismantled that so that the corporations would get the market. That's why more people are hungry today than 15 years ago. That is why 70% of India's children are malnourished, while India has a growth rate of 9%. Ταυτόχρονα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου πίεσε την Ινδία να καταργήσει τους περιορισμούς που είχε στις εισαγωγές. Έτσι, τα εισαγόμενα προϊόντα κατέκλυσαν την αγορά, προκαλώντας ένα ισχυρό πλήγμα στην αγροτική οικονομία της Ινδίας. Before WTO, we were producing 97% of the total consumption. We were importing only 3%, but now we are importing 47%. It's a result of the flow from outside. Όταν οι τιμές των τροφίμων εκτοξεύθηκαν στα ύψη, η Ινδία, όπως και άλλες χώρες, περιόρισαν τις εξαγωγές για να ταΐσουν τους ανθρώπους τους. Our first responsibility is to our own people. So if the prices within the country tend to go up, we will take all measures to ensure that there is stability of prices within the country. So we very correctly put a ban on the export of rice for some time so that the prices here stabilize. Αυτό όμως προκάλεσε την οργή του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που κατηγόρησε τη χώρα ότι προκαλεί ζημιά στην ελεύθερη αγορά. No, I thought it was an utterly illogical decision. It was a very bad decision in a world where free trade is always trying to grow and the world is smaller and trade is becoming freer. I think that the process that India adopted was really quite illogical. Ο κύριος Λεσπινάζ τζογάρει με το φαγητό. Αγοράζει στο μέλλον χιλιάδες τόνους ρυζιού ή σιταριού, δηλαδή με άλλα λόγια, σοδιές που ακόμα δεν υπάρχουν. You're not trading the actual cash physical grain, you're trading promises for grain to be delivered a month or 6 months or 12 months or 18 months in the future. So you might be trading grain that actually exists, but you might just as well more often be trading grain that doesn't even exist yet. So you're trading promises, and you trade them back and forth. And if you make a promise to buy at a certain price at a certain time, you can cancel that by selling that same contract back into the market. And that's what happens with most contracts. They're never actually delivered upon. They're traded back and forth, and they cancel each other out. Ας δούμε όμως από πιο κοντά πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα. Πρώτα χρειαζόμαστε έναν παραγωγό σιταριού, για παράδειγμα. Μετά χρειαζόμαστε έναν αγοραστή. Ο παραγωγός και ο αγοραστής συμφωνούν ότι ο ένας θα πουλήσει και ο άλλος θα αγοράσει μια συγκεκριμένη ποσότητα στάρι σε μια συγκεκριμένη τιμή και ότι το εμπόρευμα θα παραδοθεί σε ένα χρόνο, ας πούμε, από τώρα. Γι' αυτό υπογράφουν ένα συμβόλαιο. Τα προθεσμιακά συμβόλαια, όπως λέγονται, διασφαλίζουν τους παραγωγούς και τους αγοραστές έναντι του ρίσκου, όπως οι κακές καιρικές συνθήκες και οι απότομες μεταβολές των τιμών. If you're a farmer, you're afraid the prices are going to fall. You can lock in the price months ahead of when you harvest by selling here and get rid of the risk. You can do the same if you're a food buyer, a processor like General Mills or Kellogg's or Post, and you can lock in the price of the grain months ahead of when you actually need to buy it, so that when you actually do go buy it, if prices are much higher, you've got it bought already at a much lower price. Ωστόσο τα συμβόλαια δεν παραμένουν αδρανή. Οι κερδοσκόποι τα αγοράζουν και τα πουλούν και μπορεί ένα συμβόλαιο να αλλάξει δεκάδες χέρια μέχρι τη λήξη του. Αγοράζουν για παράδειγμα συμβόλαια για στάρι σε μια χαμηλή τιμή. Εάν η τιμή του σιταριού ανέβει,
έχουν κερδίσει. We're transferring risk. The whole purpose of the exchange is to transfer risk from people that have it, like farmers, and don't want it, to people like myself, speculators, that take the risk because if you take a risk and you're right, you make money. Of course, if you're wrong, you lose money. Από το 2006 όμως και μετά, μεγάλα ψάρια εμφανίστηκαν στο χρηματιστήριο σιτηρών του Σικάγο. Στα πιτς δεν έβλεπες μόνο τους παραδοσιακούς πρωταγωνιστές, αλλά και μάνατζερ τεράστιων οικονομικών ιδρυμάτων που μέχρι πρότινος δεν ενδιαφέρονταν να επενδύσουν σε τρόφιμα. Two years ago, the financial markets, which had been very greedy in lending money for mortgages in the United States, lost on the mortgage market. The subprime crisis, as it was called, led to a collapse in investments. Με την κρίση των στεγαστικών να οδηγεί την αγορά από το κακό στο χειρότερο, οι τυχοδιώκτες μεγαλοεπενδυτές είδαν στα τρόφιμα μια νέα ευκαιρία. Κατέκλεισαν το χρηματιστήριο του Σικάγο και άρχισαν να αγοράζουν προθεσμιακά συμβόλαια σε πρωτοφανείς ποσότητες, εκτοξεύοντας τις τιμές προς τα πάνω. Investors jumped out of real estate and housing and jumped on the bandwagon of primary commodities, food commodities. Their money and the monopoly control of agribusiness companies like Cargill drove the prices upwards. I totally disagree with that kind of talk. Speculators are not behind the big rise in prices. Speculation has very, very little to do with it. When bubbles break, liquid gets splashed all over the place. And yes, there's not a question there was some correlative selling. I don't doubt for a moment that speculators moved grain prices. Do I think that they moved grain prices by 100%? No, I think that speculators probably moved the grain prices by 20%, 15%. Prices would have gone up anyway because of the weather problems and the weak dollar and the export bans and tight world stocks. That's why prices went up. The hunger that has become permanent and global is totally a creation of the global food system. The global food system is not created to feed the people of the world. It's created to maximize the profits for Monsanto, for seeds, of Cargill, for trade, for selling pesticides, herbicides, fertilizer. In the period of 2007 to 2008, while food prices doubled, the profits of these companies also doubled. So if you want to understand why prices are going up, why people are eating less, you just have to look at these companies. There are sports drinks that help you to fly, to soar, to defy gravity. But who's there to help when you hit the ground? To promote healthy knees and joints, one company wanted to make a drinkable dietary supplement. They turned to Cargill, where scientists created a good-tasting liquid form of key ingredients, resulting in a solution for healthy joints that's easy to swallow. This is how Cargill works with customers. In this time of transformation, there is one company who is solely focused on agriculture. One company whose success depends on yours. One company staking its future on the future of agriculture. That company is Monsanto. 95% of all genetically engineered seeds sold today is controlled by Monsanto. Monsanto is buying up every seed company of the world. Cargill controls about 70% of staple food trade in the world, and they would like to control 100%. And they would like a situation where the prayer that says, "Give us this day our daily bread," is a prayer not to God the Creator, but is a prayer to Cargill and Monsanto. Η αμερικάνικη Monsanto είναι σήμερα η μεγαλύτερη εταιρεία γενετικά τροποποιημένων σπόρων στον κόσμο. Ξεκίνησε ως μια μικρή εταιρεία χημικών για να φτάσει τις δεκαετίες του 60 και του 70
να γίνει ένας από τους παρασκευαστές του περιβόητου Orange Agent, του δηλητηρίου που χρησιμοποιήθηκε στον πόλεμο του Βιετνάμ, ερημώνοντας τεράστιες περιοχές, προκαλώντας καρκίνους και τερατογενέσεις που μαστίζουν τον πληθυσμό μέχρι σήμερα. Το 2002 η εταιρεία πήρε άδεια από την Ινδική κυβέρνηση να διοχετεύσει στην αγορά έναν μεταλλαγμένο σπόρο βαμβακιού. Το βαμβάκι BT, που έχει εμπλουτιστεί γενετικά στο εργαστήριο με έναν βάκυλο, ικανό να σκοτώνει τα παράσιτα που απειλούν το φυτό. We have been able to develop a technology called BollGuard, a BT cotton technology, where we produce a seed that has inbuilt protection to pests, thereby helping farmers almost double their cotton production, reduce the number of pesticides they've been using in the field to control those pests, and really increase their average income. In 6 years after the introduction of BollGuard BT cotton, India has become the world's second largest producer and the second largest exporter in 6 years of introduction of BT cotton. Για αιώνες, οι Ινδοί αγρότες φύτευαν στα χωράφια τους τους σπόρους που έδινε η μητέρα γη. Ένα δώρο από τους θεούς που δεν ανήκε σε κανέναν και όλοι είχαν δικαίωμα να το χρησιμοποιήσουν. हम हमारे बीज लगाते थे, जो खाते थे उसी में से थोड़ा पोर्शन बीज करके अलग से रखते थे. नेक्स्ट ईयर यानी अगले साल वही बीज लगाते थे. उसमें कुछ ऐसा नेचुरल सीड थे, उसमें कम पानी भी आए तो भी उग जाता था, ज़्यादा पानी आए तो भी उग जाता, ड्रॉट भी आए तो भी उग जाता था. तो घर में ही बीज होता था, उसके लिए मार्केट में नहीं जाना पड़ता था या अलग से खर्चा नहीं करना पड़ता था. कपास था, जवारी था, मिर्ची थी, सब माल था. तो वो क्या सरकारी बीज था, अपना घर का बीज था? घर का भी था, जवारी का. तुअर थी, कपास था, जवारी थी, मिर्ची थी. घर के बीज से फसल हुई, इनाम मिला. यह कैसे क्यों बोया जब आपको वैसे इतना अच्छा लग रहा था वो? तो ये लोग लगा रहे करके वो लाना है, अपन भी ज्यादा पिकेंगे करके पुनः हम भी ले लिया ना, वैसा हो गया ना. तो उसको खत ये थे सब देके कर्जा हो गया, समझो ना. और उत्पन्न ज़्यादा एवरेज बोले तो 20 क्विंटल का, कोई 22 क्विंटल का, कोई कंपनी ऐसे दावा कर रहे हो. तो खर्चा कम, एक बार बीज कोई खर्चा पहले, बाद में जो रासायनिक खत को 1-2 डोज देना पड़ता था. बोले अभी तो 5-5 डोज दे के भी उतना माल नहीं लगता. ऐसा है इसका, यानी जमीन अब उतर रही है वो खत यानी बीटी की वजह से. और दूसरा यानी कॉटन बीज यानी उसमें उगता ही नहीं. घर वाला बीज नहीं बना? नहीं, वो घर वाला तो बंद ही हो गया. यहाँ तक उन्होंने नाटक किए हैं कि आप सोच नहीं पाओगे. उन्होंने बीटी के बीज हमें लाके दे दिए, इससे आपका केमिकल इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करना कम हो जाएगा. ठीक है, 1 साल बचा हुआ. दूसरे साल में हमारे यहाँ नई कीटक आ गई जिसे हम आज मिलीबग कहते हैं. पहले तो बोलते थे एक भी स्प्रे मारना नहीं है आपको, बाद में बोले ठीक है दूसरे सूंडी के लिए मारना पड़ेगा, अली के लिए मारना पड़ेगा. लेकिन अभी पोजीशन क्या है, मोन्सेंटो क्या बनाता है, केमिकल्स भी बनाता है. सबसे ज़्यादा केमिकल्स कौन बनाता है, सबसे बड़ी कंपनी कौन है, मोन्सेंटो. उनको उनका केमिकल्स के इंसेक्टिसाइड्स का यदि मार्केट में यूज़ होना बंद हो जाए तो
तो प्रॉफिटेबली ऐसा काम कोई कंपनी करेगी नहीं। सत्य तो यह है कि भारत के किसान जो महंगी खेती कर रहे हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बीज, कीटनाशक और फर्टिलाइजर जो ज़्यादा वापर रहे हैं, जो किसान सीड पर 1 पैसा भी खर्चा नहीं करता था, वहां पर 40% खर्चा करना पड़ रहा उसे। जो किसान को खाद पर 0 खर्चा करना पड़ता था, वहां 20% खर्चा करना पड़ रहा पूरे खेती के खर्चे के लागत के। जो कीटनाशक वो वापरता नहीं था, उस पर भी और 10% खर्चा करना पड़ रहा। यानी पूरे लागत के 70% तो इन्होंने लादा हुआ खर्चा है। त्या याच्यामध्ये त्यानं 1 एप्रिलले गावात फिरतच होता. मी बिमारच होतो. चिकनगुन्याची बिमारी खूप चालू होती आमच्या. तापानं पडून होतो. तो आला ना, घरात गेला. ही सुने तिथेच होती भांडे घासत. आता आम्हाला जर गेला असेल तर घरामध्ये म्हणून ठीक आहे, त्यांना राखेल केरोसिन वतून घेतो आणि पेटवून घेतला. भडका झाल्यावर म्हणून पुन्हा घराच्या बाहेरही घर पेटते म्हणून त्याला कसं का समजलं का काय आला. जवळूनच गेला. 90% धरला. यवतमाळला नेलं त्याला. यवतमाळला दवाखान्यामध्ये तर तिथं आज 2-3 घंटे राहिले. बताते बोले तो मालूम ही था, इन्हें उसको इन्हें समझा नहीं कुछ कि हमको लगा नहीं, इन्हें उतना वो पोजीशन लिंगा करके तो इन्हें लगने नहीं दिया उसमें। वैसे इन्हें खुद इन्हें वैसे इसमें रहता था, तो भी ऐसा निकल जाएंगे दिन, निकल जाएंगे ऐसा पता नहीं उसको। The story that we have suddenly become Scandinavians and don't see the sunlight and therefore getting depressed and our farmers are ending their lives. It's amazing how fertile the human imagination can be when it wants to find excuses to not understand the real roots of a crisis. The government's own data shows that the majority of farmers who have committed suicide were deeply indebted. Our data shows that the majority of them got into debt because of BT cotton. Most suicides of the 200,000 are in the cotton belt. Most of them have grown BT cotton. The story of Indian farmers is the story of how these rapacious corporations have emerged as criminal corporations. I often say, if 200,000 people had been killed by a dictator, we would have called it a genocide. Suicides in India are a tragic phenomenon and unfortunately have existed way before the introduction of BT cotton in 2002. The primary cause for suicides is really indebtedness, and then some of the other causes are inadequate infrastructure and irrigation, untimely rainfall, so on and so forth. काय सांगतही नव्हतं मला तसं काही. कर्ज असं आहे तसं आहे काय म्हणत नव्हतं. स्वतः गुंगीत राहत होतं कसं करायचं का करायचं. नेहमी चिंताच राहत असं. झोपूनच राहाय असतं असं. कोणते असं खुशीवर काय राहत नव्हतं. बाहेर चांगलं राहतं पण घरी आलं का खूप चिंतामध्ये राहत होतं. म्हणलं का होते म्हणलं
आपल्याला आता देवाण दिलं तर या झालं, पण आता कसंही काढू, पण आता तेवढं काळजी करू नको बी म्हणतो ते, पण आता आपलं कसं होते का, थोडं कर्ज आहे, पिकत नाही, मला तर काम होत नाही, आपण का करायचं, कसं जगवायचं, 3-4 मुली आहे असं म्हणतो ते, एवढंच म्हणतो ते, पण जास्त काही सांगत नाही. हम स्कूल में गए थे, लड़कियों ने बताया कि पापा ने जहर पिया, फिर मुझे उतनी समझ में नहीं आती थी, पी लिया है तो ऐसे ही कुछ होगा, आते गई थी, मुझे उतनी याद नहीं। जहाँ भी जो भी विलेज में जाके हम लोग बताते हैं स्टार्ट करो ऑर्गेनिक, वो आज हम कह सकते हैं कि वो टर्मिनेटर है। कोई भी पौधे को जो भी बीज लगता है वो यदि बचा के रख ले, धूप दिखाए और अगले साल बीज करके यूज़ करे, बीज करके बो दिए, तो पौधा जो निकलता था वो वैसा ही निकलता था जो पहले निकला है। बीजों का उपयोग उसके लिए करे तो हम मर जाते। और ये बात किसी ने भी किसी भी किसानों को अभी तक बताई नहीं। यदि वो आदमी का गांव में मालूम हो गया कि इसको कुछ भी आउटपुट नहीं आया, तो जो गांव का साहूकार है वो भी उसे पैसे नहीं देता है, बैंक वाला भी पैसे नहीं देता है, वो डिप्रेशन में चले जाता है और एक ना एक दिन वो कुछ ना कुछ आगे कर बैठता है। तो सबसे ज़्यादा खराबी जो किए है हम लोगों की, वो है बीज. Ακόμα όμως και αν οι αγρότες κρατήσουν σπόρους για την επόμενη χρονιά, κινδυνεύουν με μήνυση από την εταιρεία. Οι σπόροι προστατεύονται με πατέντα, είναι δηλαδή πνευματική ιδιοκτησία της Μονσάντο. Μπορεί να ακούγεται παράξενο, αλλά με αυτή την πατέντα η Μονσάντο κατοχυρώνει κάτι ζωντανό ως δική της εφεύρεση και αποκτά το δικαίωμα να το εκμεταλλεύεται αποκλειστικά για 20 χρόνια. नहीं तो यदि कोई किसान बीज बचा के वो फिर से अगले साल बोए तो उसको क्रिमिनल ऑफेंस कहा जाता है, फौजदारी गुनाह समझा जाएगा और उसके लिए फाइन कितना है? 25,000। आज इतने सारे छोटे फार्मर्स बसे हैं, कोई 50,000 या 25,000 फाइन भर सकता है और गुनाह क्या? तो मैंने मेरे सीड्स बचाए, अगले साल लगाए। किसान ऐसा नहीं करेगा तो क्या हर साल उसके पास जाएगा बीज मांगने के लिए? बताइए ये कहाँ तक है? ये ह्यूमैनिटी है? Certain farmers have entered into contracts with us stating that they will use the seed for produce in one season and then for some reason chosen to use the seed the following season. That violates the contract that we had with these farmers. It is a very small number and in most cases we look to sort out these differences out of court. So when you apply a patent rule and say that you can't save the seed for another growing season, first of all, you're massively increasing the cost of production for farmers. Massively. पैशाच अन्न नेणं सर्व होतं. शेतीला लावलं, मुलीला बी कर्ज काढूच लागलं. म्हणजे हे असंच कर्जापाण्यापायी पुरले खूप पैसा लागला, तर बचली नाही बा, पण ते आपल्याच मूडमध्ये राहत होते. एवढं मोठं कर्ज झालं पुरा. हा माणूस होता तर आणत होता. आता मी बाईची जात मी कोणापाशी जाऊ मागायला, मला कोण देणार? त्या आता मा किती म्हणलं तर नाजूक परिस्थिती झाली. 30 किलो भेटते समजाचा अनाथ. लेकरा बाळाचं पुन्हा शिक्षण पाणी, पोरगी शिकत आहे. The cotton seed earlier did not have protection against bollworms. Farmers had to spray pesticides.
Scientists, agriculture scientists around the world were able to find a more sustainable way to protect the plant against that bollworm. That was a technology called Bt cotton, which is inserted into the seed. It's a product of the science in the seed. It's really an oligopoly that controls that food supply, the seed supply. And those companies now are going beyond the patenting of a single plant variety to saying we can patent all plants and we can patent all crops with a single patent. Because we're claiming traits within those varieties and in those crops that are common to all of them. So we control everything now. We control the food system. बीज इन्होंने पैदा किए कभी नहीं. आज तक किसी ने लाइव थिंग यानी जिंदा चीज पैदा कर सके नहीं करे. Whereas in the 1970s, there was no proprietary seed in the planet whatsoever. None, really. Today, 82% of the seeds sold are proprietary. They're part of a patent regime of some kind. That's an enormous change. Genetically engineered crops do not produce more food, but they tell the lie to grab the markets. More trade does not feed people. It leaves more people hungrier because a globalized trade then becomes a trade controlled by 5 agribusiness corporations who can bid the prices as they want. When they want to speculate upwards, they speculate upwards. When they want to fix the prices downwards to capture markets, they take the prices downwards. And as their profits increase, people starve. So they've got what they need out of this. They've got the control. And frankly now, because they have that control, they don't need biotech anymore. They've got the marketplace. It's to them. They control the first link in the food chain. So they've won. Water? Possibly. It's not traded now, but it could be in the future, perhaps, sure. I don't know much about it because there is no market to buy and sell water. Maybe there will be in the future. If I have a market where people who need water and a market of people who have water can get together and through their own best interest discover, and that's an important word, discover the price of that commodity. How dare a government, how can a government, how can a group of supposed intellectuals sit down and say, this is the price of water everywhere around the world? Will there be circumstances where some people will not have water? Yes. That will happen. That is the harsh reality of how markets function. Do you sometimes run out of soap? Yes. Whose fault is that? Probably yours, because you didn't go to the store to buy any. Should you blame the government? No. It's your fault.